So behind me, what is happening here is Anand Sir. आनंद सर बात कर रहे हैं. मेरे थ्रू आनंद पुलकित सर की आवाज आ रही है क्या? यस सर. आ रही है? ऑल राइट. पुलकित सर इज राइट. ठीक है. तो बच्चों, जो बच्चे यूट्यूब के ऊपर है, तो मेरे पीछे आपको क्या दिख रहा है? ये आनंद सर अपने बहुत सारे बच्चे जो कि अभी आईआईटी में क्लियर होकर आईआईटी में जाने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग ऑफ आईआईटियंस, राइट? सो दीज आर अवर ऑल गैंगस्टर्स ऑफ आईआईटियंस, द गैंग ऑफ आईआईटियंस. उनसे आनंद सर आप बच्चों के क्वेश्चंस जो बहुत सारे आपके मन में होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. आनंद सर डिस्कसिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव इन योर माइंड. और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे इकट्ठे किए हैं टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर भी, राइट, एंड ऑन द डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स. सो बच्चों आ जाओ, इन बच्चों से बात करते हैं, इन बच्चों से समझते हैं कि हाउ डिड दे प्रिपेयर, उनने अपने टाइम पे प्रिपरेशन कैसे की थी और किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे. तो तुम भी पहुँचोगे, यस कि नो, राइट? तुम सबको भी पहुँचना है. सो गेट इंस्पायर्ड इन अमेजिंग बच्चों के साथ, दीज वेदांतु गैंग ऑफ आईआईटियंस के साथ. ठीक है, तो चलो ओवर टू आनंद सर. कहाँ गए आनंद सर? ये रहे आनंद सर. आनंद सर इज हियर. How is everyone? Yes, Pulkit sir, can you hear me loud and clear? यस सर, ओवर टू यू नाउ. Okay, so hi everyone. बच्चों, सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां मारो because all your seniors who you are watching today, जिनको आप देख रहे हो, all your seniors who are going to IIT, there are only few of them, will be bringing them again and again, lot of them, because there is so much learning from them. बहुत कुछ सीखने को है. और अभी मैंने नीट का सेशन किया, वहाँ पे बच्चों ने इतनी सारी चीजें बोली हैं कि मुझे लगा एक सेशन बहुत कम है उसको जस्टिफाई करने के लिए. So what I will be doing is I have actually collated lot of your questions और मैं आज इन बच्चों से पूछूंगा कि वो उन क्वेश्चन का आंसर मैं बार-बार मैं देता हूँ, पुलकित सर देते हैं, आपके बहुत सारे टीचर्स देते हैं, but who better than these kids who have actually just crossed the journey, gone through the journey, जो आप अभी जाने वाले हो, गुजरने वाले हो, आप 11th में हो, 12th में हो, ये बच्चे उससे गुजर चुके हैं and therefore these are the best ones to tell you directly, right? तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो जोरदार तालियां मारो यार. मतलब मुझे सबसे ज्यादा इनके लिए पहले तालियां चाहिए because you are going to be there. एक दिन आप बैठोगे यहाँ पे और आपके लिए जो आपके जूनियर्स हैं वो तालियां मारेंगे. तो आज आप जितनी तालियां मारोगे इनके लिए, उतनी तालियां आपके लिए भी मिलने वाली है. तो जोरदार तालियां मारो एक बार. From my side to the entire kudos to these awesome guys who are going to IIT. And kudos to all those who have put up hard work, because as I've always said, at Vedantu we always try to celebrate hard work. We always try to encourage hard work because ultimately selection is a consequence. If you have been consistent and you have been doing hard work, then you will definitely be selected, right? अब हम आते हैं सबसे अपने पहले क्वेश्चन पे, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन है, बट मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ऑल दोस्त जिसको लगता है कि जिसकी लाइफ में वो क्वेश्चन का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, वो अपना हैंड रेज करेगा और मैं उससे पूछूंगा, एक दो बच्चों से पूछूंगा. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिस्ट्रैक्शन को लेके. एट माय टाइम्स आई वाज वेरी लकी. आईआईटी मतलब उस समय मोबाइल फोन नहीं होता था, एंड द डिस्ट्रैक्शंस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती थी. डिस्ट्रैक्शन मतलब खेलने के लिए बाहर जाना पड़ता था, दोस्तों को फोन करने के लिए टेलीफोन बूथ पे जाना पड़ता था. सो देयर वाज लॉट ऑफ इनर्शिया जिसको ओवर करके आप डिस्ट्रैक्शन की ओर जाते थे. स्टिल देयर वर साइबर कैफेज, वी यूज्ड टू गो एंड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन इंटरनेट. इंटरनेट वाज न्यू थिंग, बट दैट वाज अगेन इनर्शिया, और आपको पैसे भी खर्च करने पड़ते थे. विद मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन इज इंक्रीज. ठीक है, जब मन किया देयर इज सोशल मीडिया. वी डोंट वांट टू गेट बोर्ड इन दिस वर्ल्ड. इन टुडेज जनरेशन डोंट वांट टू गेट बोर्ड. दैट्स द कॉमन थीम. तो आप बताओ, आप डिस्ट्रैक्शन से बचे कैसे रहे 2 साल, और क्या क्या किया उस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए? Who wants to answer? Who wants to take this question? Yes, चर्चित, महिमा, करणवीर, सबने बोला है. ओके, तो आई थिंक चर्चित से स्टार्ट करते हैं. चर्चित, आपका नाम, आपकी रैंक, और एक बार वहां से स्टार्ट करते हैं, देन विल मूव टू. हाँ, हेलो सर मैं चर्चित शर्मा, सूरत रहता हूँ, एंड मेरी JEE एडवांस रैंक 11,108 रही थी अभी. ओके, तालियां मारते जाओ बच्चों नीचे. जी, तो सर हम मेरे बैच में तो एकदम ही ऐसा हुआ था कि पूरे 10th तक तो स्कूलिंग करी थी, एंड बाद में भी ऑफलाइन कोचिंग ही ली, बट कोरोना के कारण वो फुल ऑनलाइन हो गई थी अपने आप ही.
एंड सर वो ऐसा मतलब उसके पहले ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं लेता था, एंड तभी मुझे मेरा फोन भी मिला एंड लैपटॉप भी मिला क्लासेस के लिए। अब सर तब दिक्कत ये हुई थी कि तब यूट्यूब तो मतलब बहुत कुछ आता है उस पर। तो सर स्टार्टिंग में कुछ होता तो रहता था ऐसा कि थोड़ा ज्यादा वीडियो देख लिया उल्टे सीधे जो काम के नहीं, रेलेवेंट नहीं है। तो उसके लिए सर मैंने ये डिसाइड करा था कि टारगेटिंग रखनी है दिन की। वो टारगेट और एक्स्ट्रा रखने का, ऐसा टारगेट रखो कि तुम्हारा पूरा ही ना हो पूरे दिन में, अगर पूरे दिन भी पढ़ रहे हो तो उससे सर अगर तुम्हारा दिमाग भी उधर जाएगा, यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ तो भी लगेगा यार ये मेरा आज हो ही नहीं पाएगा काम। तो वो बहुत हेल्प करता है ऐसी चीज। मतलब खुद के अंदर मोटिवेशन जगाया, कोई ना कोई रास्ता ढूंढा जिससे कि डिस्ट्रैक्शन से आप बच पाए, है ना? जी सर जी। तो अभी चलता हूं मैं करणवीर पे। करणवीर इज अ ग्रेट एग्जांपल। बच्चों बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मेरी एक बार रैंक खराब हो गई जेईई मेन में, कैन आई इंप्रूव फ्रॉम देयर? So Karanveer is a great example because he got a 95,000 rank in JEE Main, and from there he was able to get to a some 4,000 plus rank in JEE Advanced. So which was itself an amazing improvement. So Karanveer, पहले तो ये बताओ कि क्या खाना पीना खाया था JEE Main के बाद और एडवांस के बीच में? ऐसा क्या किया? What did you do to actually improve so magnificently? Because last year the best improvement was someone getting a 80,000-85,000. और वहां से 8,000 रैंक आई थी। This is like crossed all the limits. So what happened in the first mains, and from there what did you do? और distraction कैसे overcome किया? And what were your distractions? Thank you so much sir first of all. So video आपका, हाँ, yeah. Hi guys, मेरा नाम करणवीर है। As sir rightly said, JEE mains first में मेरा रैंक 95,000 था। उसके बाद बोर्ड का टाइम आ गया था, बोर्ड की प्रिपरेशन में मैं चला गया था। फिर उसके बाद बोर्ड के बाद फिर सेकेंड में टाइम में भी अराउंड 20 डेज ही बचे थे, उसमें भी कोई मैं खास इंप्रूवमेंट नहीं कर पाया। बट उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं एकलव्य का मॉड्यूल सारा का सारा सॉल्व कर दूंगा। एंड आई गेस ऐसा एकलव्य के मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन नहीं था तो मैंने सॉल्व कर दिया, उसी से मेरी इंप्रूवमेंट हुई। वाओ। एंड तो 95,000 जो पहली बार रैंक आई थी तो ऑब्वियसली 11 12 में बहुत डिस्ट्रैक्शन रहा होगा, मतलब क्लियरली योर रैंक इंडिकेट्स। सो वो क्या था and were you able to overcome that? मतलब एक तो बहुत ही encouraging बात बोली कि एकलव्य का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तुमने, कुछ लीव ही नहीं किया, which actually improved your rank. तो 11 12 का बताओ, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन के बारे में बताओ, क्या था? सर मेरी 11 12 ऐसे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी मेरे को इनफैक्ट, बट मैं 11 के मिड में जब हमारा रोटेशन मोशन वगैरह चल रहा था तो समझ नहीं आ रहा था, उस टाइम पे मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। फिर मैं मूवी वगैरह देखने लग गया। उसके बाद मेरे ख्याल से 15-20 डेज ये सब चला था। उसके बाद मैंने एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को फॉलो करा एंड विद इन 20 to 30 डेज मैं उस टाइम टेबल से अकस्टम्ड हुआ। तो आई गेस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को फॉलो करो, उससे फिर डिस्ट्रैक्शन का आई गेस स्कोप बचेगा ही नहीं। ओके, anyone with an interesting story of distraction? Mahima? So what I used to do was, like, even if you're using laptop or mobile for study, so you get an application for focus mode session. So you can apply that for 3-4 hours. And for certain distracting apps, you can set the app timer as 5 or 10 minutes. And if you will use more than that, it will automatically stop. And then you will again start studying. So like that, I used to maintain the time balance. I should understand it from you. मतलब मैं भी एक बार कॉल करके पता करता हूँ कैसे करना होता है, उसको सेटिंग कैसे करनी होती है, and I will definitely have a Telegram session specially on that. ऐप में किस तरीके से हम सेटिंग करें so that we can actually do that. Mahima, what is your rank? The 608. 60882. So awesome. And तालियां नहीं रुकनी चाहिए बच्चों, मतलब ये बहुत important है. Everyone has done their hard work, their bit, and actually everyone will reach to their target. And मतलब इन्होंने 2 साल मेहनत करके अपने टारगेट तक पहुंचा, आप भी पहुंचोगे, यू विल आल्सो रीच टू योर टारगेट। बट इसके लिए आज से वो सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस सेलिब्रेशन विल पुश यू इंटरनली। हम सब आएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, चले जाएंगे, एंड इट मूवमेंट जो हमारा मोटिवेशन है दैट विल बी एक्सटर्नल, दैट विल बी वेरी मोमेंटरीली। बट ये जो मोटिवेशन आपके भैया दीदी दे रहे हैं ना, ये परमानेंट है, एंड ट्रस्ट मी इट विल एक्चुअली बूस्ट यू फ्रॉम इनसाइड, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके दिमाग से परमानेंटली आज सेट हो जाएगा या निकल जाएगा बाहर। सो नाउ स्टार्टिंग विद दैट, प्रवीण, यू आर I will just jump over to you this question.
11th, when you started, you moved from 10 to 11, and suddenly the level, because we are talking about the biggest distraction starts happening when the biggest stress happens to you, right? So Exactly. when you transition from 10 to 11, suddenly the volume of books increased. And when the volume of books increased, clearly there was a lot of pushback. Should I study? Should I focus? How to focus? And the first 3 months of 11th must have been troubling for you, right? And it is mostly for the students, most of the students. So what did you do in the first 3 months is very critical for all those who are moving to 11th. Hello sir, I'm Praveen. I scored an All India ranking of 1838. And whatever question you asked is exactly correct, sir. Like from 10th to 12th, 11th, the transition is this much. Like for in 10th standard, we'll study just one textbook for science, whereas in 11th standard, we'll study different textbooks, that too in parts. So what I used to do, first 2 chapters will be very easy, like measurements and units and basic concepts of chemistry. I started it enthusiastically, but after that only I started to feel that the heaviness of the portion, like trigonometry started, rotational motion started, and in chemistry, organic chemistry started. So in that form, I actually did some mistake which juniors should not do actually. So at that time, I started to refer more and more books. I bought a number of books actually, but to be honest, I didn't complete even a single book except the Tattva material. So after buying all those books, I realized that if I concentrate on only one material, I will maximize it. So I started studying Tattva exercise 1 and 2, attended the Tattva discussion session, and I slowly manage it. And very important thing is that keeping your peer pressure, peer group similar. Like you should be able to communicate whatever problems you are facing. Like initially, I was also facing the problem. When I asked my friends, they were also facing the problem. So that would be important. Awesome. So over to 𝐒𝐞𝐬𝐬𝐬 for this answer. Did you focus on Tattva book or did you focus on something else? And start with your name and rank. Myself 𝐒𝐞𝐬𝐬𝐬𝐬 and I got ranked of 2590 JEE Advanced. Sir, so मैंने एक टाइप मटेरियल नहीं फॉलो किया था. मैंने जो सबसे पहले से जो सबसे अच्छे एडवाइस दूंगा, जो टीचर्स कह रहे हैं वो फॉलो करो ब्लाइंडली. ज़्यादा अपना माइंड मत लगाओ कि ये सर इन लोगों को नहीं पता है. टीचर जो कहते हैं उसको फॉलो किया. सर तो मैंने फिजिक्स में तो फिजिक्स केमिस्ट्री फॉलो की थी, मैथ्स में विनय कुमार 11th में, और फिर 12th में जो सर मटेरियल था वो किया था, और केमिस्ट्री में एम.एस. चौहान ऑर्गेनिक में, और फिजिकल केमिस्ट्री में असाइनमेंट्स ही किए थे. सर मैंने जो सर देते थे, और इनऑर्गेनिक में सर मैं थ्योरी रीड करता था, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं किए, बस थोड़े से वीकर एस्पेक्ट्स. Got it. So these were the books which you followed, and आपका भी point. So Praveen mentioned that he was completely focused on that. 𝐒𝐞𝐬𝐬𝐬𝐬 said he was completely focused on whatever teacher mentioned, and obviously because of the different batches, because Praveen you must have been a different batch where teacher mentioned books, and you must have been in a batch जहाँ पे teachers were telling you to solve that, right? So, but it doesn't matter. See, kids, it is important to understand today that it doesn't matter whether you solve Tattva or you solve external books. What you need to do is you need to complete it, and you need to completely follow what your teachers are telling you, because they know you the best, they know you the current level, and they will exactly advise. So coming over to that, the next question, Sweta and Soumya, Tattva, obviously you must have actually, whether you solved Tattva or book, and whether you were able to complete them or not, because there are a lot of doubts in the students' mind that while solving it, we are not able to complete all the questions at a time. So we'll start with Soumya and then we'll move to Shweta. And हम जब वो सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत पैनिक हो जाता है, बहुत स्ट्रेस आ जाता है कि बाकी लोग कर रहे होंगे, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, द रेस्ट पीपल मस्ट बी सॉल्विंग इट. सो हाउ डिड यू टैकल दैट? फर्स्ट क्वेश्चन, whether which book you solved, Tattva or external, and whether you were able to complete it or not. Soumya. Yes, hello everyone. Your name and rank. I'm Soumya Gupta and I have a rank of 15,497. Now, my journey has been very different. I'll probably take a different journey from everyone else present here. So, my JEE preparation has been, I started in 12th. In 11th, I had absolutely no idea about JEE and what to do for it. And for advanced, I prepared for just a month. So, maybe you can see that however your preparation may be, I prefer to focus on the basic concepts.
if you understand everything in depth, then I think it's going to be a major brand booster for everyone. And on solving Tattva, even I couldn't solve each and every question, and I think it's completely okay. That is fine. What you need to focus on is that the questions you are solving, you should be able to understand what you are doing. Like, it's not a blind race. And first of all, you shouldn't come under peer pressure. You shouldn't compare yourself with others at all. Everyone as an individual is unique, and somewhere or other, you have a talent that is meant to shine through. So you need to focus on that. And for me personally, I followed Tattva. And I was a full-time school-going student, and I was also a house captain in school. So I hardly took any leaves, and for me it became even tough to manage Tattva and schoolwork with that. And on top of it, I felt sick a lot this year. I had COVID and then another hand-foot-mouth virus. But one thing that was positive in my preparation was that I never felt stressed and I never took the pressure to perform in exams. I think that's why I was able to perform in the exams. Because once you are calm and composed and enter the exam hall with a completely neutral mind, then your performance doubles then and there. Because if you are under pressure, you're going to forget the easiest of things. And you don't want that because you've already prepared a lot, you've put in the hard work. So at the end of the day, the more calm and composed you are, my parents have a big role to play in that. Along with the Vedantu teachers, I think Anand Sir and 𝐒𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 Sir themselves sent us motivational messages every day. And especially once the first JEE main date was released, every day we were getting messages to remain calm. So that was a big thing in my preparation. You shouldn't take any pressure. Great, Soumya. So over to you, Shweta. And Shweta, you were staying and you stay in IIT Chennai, right? So you stay in that campus. No, sir. I don't stay in the campus, but you stay in nearby. very near. Nearby. Okay. So looking at IIT Chennai, doesn't it, like Soumya mentioned, do not take pressure from your peers. But sometimes this external thing, you always looking at IITs, they're always feeling that thing that you can go to IIT. So that did not put pressure on you, or did it put pressure on you? No, actually, I did my schooling inside. My school is situated inside the campus, so I did all my 14 years of schooling there, and it did not hit me till my 11th that I'm in an IIT. Only in 11th I had that realization hit. I mean, not even in 11th, like only in 12th it really hit me. But then also, I took it in a new sense. Like I was odd that, oh my god, I'm inside an IIT already, and I was just looking all around me and trying to utilize the year that I had in my hand in school. Yes, it motivated me even more instead of pressurizing me. Got it. So no pressure at all. And what about books? You followed Tattva, or you followed some external book? In the initial when normal classes were going on, when we were covering 11th and 12th syllabus, I was focusing only on Tattva. Like I did not go for any other extra book. But for advanced, in the last 1 month, I did try solving MSc, MS Chauhan and 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐴 for chemistry and NOSP. Okay. Awesome. 11th and 12th, I did Tattva only. Okay, great. So, lot of serious question now, and I can see a lot of serious faces as well. And now, basically, one more candidate has joined, and we'll also ask a little bit fun questions. What did you guys do? It is so much stressful. 2 years is not an easy journey. It is full of ups and downs. There are a lot of times when you are excited, motivated that, oh, this is going in my direction. And suddenly the next very day or next week, you think, oh no, I can't do it anymore. And in between those gaps, in between those feelings, there is a moment when you try to do certain things which is not expected out of you, some mischievous activities. So few of them, if any one of you have done certain things which go back in time and you want to tell to your juniors, oh, this is what I did, something which you can tell in public. Obviously, I will not want you to tell something which is not cannot be said in public. So anyone who wants to take that question, so anything which you feel that, oh, बाद में बताएंगे अपने juniors को, ये किया था मैंने,
तब भी IIT हो गया मेरी. Yes, Praveen. Like sir, as you said, there will be ups and downs in the preparation. Of course, like whenever I feel very low, I will take a day off and totally binge watch any series or movie which I wanted to watch. Like I'll binge watch from the starting and then, so that I'll feel like bit relaxed, and next day I'll start it very fresh. And also I had this habit of going to play with friends every week. Even before JEE Advanced last week also, I went with friends to play around on this Sunday, so that I'll get to know about my friends, and it'll be happy, like mood changing kind of thing. Okay. So, but बच्चे chat पे लिखेंगे IIT हो गया इसलिए बोल रहा है ऐसा. No, it's really So बच्चों, actually it's true. It doesn't matter. Actually, if you go to IIT, if you go to any college, see, life में you have to have a balance, because 2 years is going to be stressful. It is not going to be easy, and therefore all the students who are here are mostly those students who were just like you, who actually right from the day one, they never felt, it was not an easy job for any of them, right? It was really, they actually struggled, they actually worked hard and then got the rank. मतलब बहुत मेहनत करी है उस रैंक तक पहुंचने के लिए, और आपकी तरह ही अप्स एंड डाउन से गुजरे. So therefore these seniors of yours, इनको इसलिए बुलाया यहाँ पे because they are the role models जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. So Vikya, what was yours? यस सर, मैं जब भी ऐसे मैं क्लास होके मैं थोड़ा स्ट्रेसफुल हूँ तो मैं सबसे पहले जाता था अपने छोटे भाई के पास, तो उससे परेशान करता था, उसने मेरी बहुत Okay, so ये भी मैंने बहुत लोगों को देखा है. Usually यहाँ पे भी समझता था कि नहीं. हाँ, मतलब कई बार ऐसा नहीं होता सुबह क्या कि मतलब मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ, वो क्यों खाली बैठा है, चलो उसको तक करके आता हूँ थोड़ा सा. Yes, so good one. I hope everyone who is actually thinking of yes, Soumya, आप तो स्कूल में जा रहे थे तो बहुत सारे मिसचिवियस एक्टिविटीज हो गए. हाँ, बताओ. सर, स्कूल का तो अलग है. लाइक आई पेंट, तो आई हैव फाइन आर्ट्स एज अ सब्जेक्ट. Okay. एट द एंड ऑफ द ईयर ये हो रहा था कि लाइक अब कुछ बड़ा सा बनाना है, एंड इवन तो आई न्यू कि मुझे जेई भी देना है एंड बोर्ड्स भी आ रहे हैं, प्रैक्टिकल भी होंगे. नवंबर में एकदम से ऐसे जोश चढ़ा एंड आई थिंक कि अब तो 6 फीट की पेंटिंग बनानी है. And I took up that project and I made a 6 feet big acrylic painting that is in my room right now, and I completed it. And फिर उसके बाद लगा कि अरे बहुत टाइम तो नहीं गया, but I don't regret it. It was a good break and I am one of the students जो बहुत लंबा नहीं पढ़ सकता है गो में, तो मेरे लिए तो it was very nice. Okay, so आप में से अभी will stay with you and ask this question because this is a frequently asked question with most of the students, especially those who come to online. They have school. Most of the students who join online, they go to some school or the other. So you have school work, then you have JEE preparation, and you have to do self-study. So how did you manage all those 3 things? Yeah, Praveen and Shweta, any one of you can answer that. Shweta, over to you. Yes, sir. So, actually, my school timings, I am a state board, Tamil Nadu State Board. So, our school timings are pretty long. So, I go to school. I start from home at morning 7, and I come home by 5:15. And Vedantu classes started at 5:45 and it ended at 10:45. So, what I did was, 10:15. It ended at 10:15. So, in the 10:15, before I slept at 1 hour, I spent in somehow finishing the assignments for the day. And Tattva, since I was focusing only on Tattva exercise 1 had chapter-wise, topic-wise questions, but 2, 3, and 4 questions were all mixed. So I spent some time marking the questions which I could do based on the concept covered in the class today. And then I just went to sleep. And the next morning, I tried to do those questions. First I tried to revise what was done the previous day, and then I tried to do those questions. And I actually took Tattva to school, and when in between classes I kept it under my desk and I used to do that. And but I could not do much of it, but I did try that. And then I took a lot of offs from school.
and mostly I try to complete 1 and 2, 1, 2, 3 by the time the chapter was over, like along with the chapter, and 4 later on. Got it, got it. So basically, you skipped school sometimes when it required, and then you were focused on certain exercise that this needs to be completed, and those questions which were left, you marked it to be covered later, or something of that sort, right? So basically, managing is difficult. Doing school coaching is difficult. Praveen, how did you manage? Actually, as Shweta said, I'm also from Tamil Nadu and I studied in a CBSE school. Usually my timing used to be 7:30 to 4 o'clock or 4:30, where I got permission to leave the school by 4. And usually school will be going, I'll take that book with me compulsorily, and I'll keep under my desk and I'll keep solving it. And most likely, as I get marks in those subjects, teacher will not also much care about me. And after which I'll come to home and attend the classes. It starts at 5 and sometimes goes till 10:15. After which 1 or 2 hours I'll spend on writing the short notes for the classes which were been held, and the next day morning I will try to cover, and I'll say some funny incident or which I think people might use, sir. Like what I used to do now, my school there's a rule like if I put leave, the next day I have to bring leave letter for sure. For that, what I did, right, I took a black pen and wrote all the format of the letter, excluding the date and the reason. And I took a black and white copy of that, like 15 copies of that. And whenever I take a leave, I will fill that thing and give it to my school the next day I'm going. This was one of the thing I did. And when in January month, I should have got that idea earlier. In January month, actually pre-practicals and things will be going on, right? So JEE Mains also near. So in that time, I was daily giving mock tests. So someday they called from like school was like, you should surely come to school, whatever the case may be. So I woke up at 4 o'clock actually that day, and 4:30 refreshed, and I started test at 4:30 and completed it at 7:30, and then went to the schools in the morning. So these kind of things. Okay, so over to you, Mahima, and then there is a very, very, very important question about choosing online. So all of you, how many of you are long-term students of Vedantu? Can you raise your hand? Oh, so everyone is a long-term student of Vedantu. So, I didn't see Asim is also here. Asim, right? Yes, sir. Okay, so all of you are long-term students. Great. And we have Sanidhya also, Asim also, and let me see who all are here apart from these guys. Great. So now my question is, why did you choose Vedantu? Because see, there are so many things outside. We have offline, we have online, we have online. There are many choices. So why was Vedantu chosen, and the ambition with which you chose Vedantu, right? You must have some feeling before choosing Vedantu. Was it fulfilled at Vedantu or not? We'll start with you, Asim. आपका क्या आंसर है यहाँ पर? कहाँ से और रैंक बता दो यार एक बार. सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरी JEE Advanced मेरा 11,605 में. चलो तालियां मारो यार बच्चों, मतलब जो भी देख रहे हैं यहाँ पे सब तालियां मारेंगे, मतलब सारी रैंक्स के लिए. एंड यस, तो आसिम बताओ, मतलब कैसे, मतलब क्यों ज्वाइन किया था वेदांतु, और फिर कैसा रहा आपका ये सफर 2 साल का? सर जैसे मुझे 10th के बाद कुछ IIT के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैं YouTube पे एक वीडियो देख रहा था, उसमें वेदांतु का ऐड आया था. उसके बाद मैंने IIT के बारे में उसके बाद सर्च करना शुरू किया, तो उसके बाद मैंने वेदांतु में 20 सेट स्कॉलरशिप वाला दिया था. इसी के बाद से मैंने वेदांतु ज्वाइन किया 2 साल लॉन्ग टर्म बेस पर. ओके, तो सबने मतलब बेसिकली आपकी सफर कैसी रही? मतलब अच्छी रही, मजेदार? यस. चलो ये तो चलो इसके बारे में और भी डिटेल में पूछता हूँ, बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन ऑफलाइन जब बच्चे बोलते हैं, आई पर्सनली बिलीव, मेरा एक बच्चों को एक मैसेज रहता है, और आप मुझसे बताना, मतलब जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आई बिलीव जो ये IIT की तैयारी है, नीट की तैयारी है, ये बहुत ही रिगरस तैयारी है. इसमें you require lot of consistency, lot of hard work, and therefore self study becomes extremely important. जब हम ऑफलाइन में जाते हैं usually, and why we started Vedantu in the first place, ऑफलाइन में हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं. इवन तैयार होके
जाने में भी, अगर घर के बाजू में भी मेरा ऑफलाइन अगर इंस्टीट्यूट है तो भी मैं आधा घंटा तो लगाती हूँ। मैं तैयार होऊंगा, पहले देखूंगा मैं ठीक ठाक दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, फिर वहां जाऊंगा, दोस्तों से बात करूंगा। इट हैपेंस विद द स्कूल आल्सो, राइट? वी गेट रेडी फॉर द स्कूल एंड इट इज नॉट कि मैं उठ के ऐसे ही चला जाऊंगा। सो वी स्पेंड सम टाइम, वो हाफ एन आवर वेस्ट होता है, फिर मैं वहां जाता हूँ, मिनिमम हाफ एन आवर की बात करो, इट कैन गो अप टू 1 आवर एंड देन कम बैक। तो वो 1 आवर दिन का 1 आवर या 2 आवर, और मैं लाइफ में अगर आज वापस आपको 11th 12th में भेज दूं और 2 घंटे एडिशनल ले दूं सेल्फ स्टडी के, सो द 2 आवर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और उसकी एक्चुअली आप महत्वता या फिर उसका इंपॉर्टेंस जो है, ओनली व्हेन यू कंप्लीट 2 इयर्स देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था आपकी लाइफ में। एंड देयरफॉर आई बिलीव, I congratulate all these students who have been part of who took online as a courageous decision, because it was not easy. Online उस समय चलो कोविड था, आपको लेना ही लेना था, बट उसके बाद भी कंटिन्यू करना, जब आपके दोस्त ऑफलाइन जा रहे थे, आप डेली देख रहे हो कि रैंक वहां से आती है, यहाँ से आएगी नहीं आएगी। तो महिमा, टू यू, आपके दिमाग में कभी डाउट नहीं आया क्या कि यार बाहर चले जाना चाहिए, ऑफलाइन चले जाना चाहिए, वहां पे रैंक आती है? So I'll tell you my journey. So like after 10th, right? So I asked my parents that I had to go. So I live in a very small city. It's located in MP. So we do not have any all the major coachings. There are none of them over here, right? So ultimately, if you want to prepare, you have to go to the other city, right? So parents do not generally allow that you're sending your girl child to another place. You can get a lot of problems over there. So they didn't allow. Then I have to search for online. So initially I started with Vedantu JEE. So on YouTube I saw in 11th I did over writing, and then in 12th I felt that I had to do something. I can do it. When you start believing that you can do it. So then I joined Vedantu JEE for 12th course, and after 2 months through KVPY I got into the toppers batch, and then Vikas sir taught and he supported me overall. So this was my journey, like very much ups and downs. First of all, I had to make a belief that I will be able to do, and once I got the belief at the end of 11, it was all a very easygoing thing, and I just like online is something which we can do, and traveling time is saved in that. And even if you go somewhere at offline, you will waste your 1 hour in talking with your friends. I've seen people who are wasting, they are more than traveling, they waste in chatting with your friends and doing a lot of a number of things. Got it. तो सानिध्य आपसे अपनी क्वेश्चन पूछा है, तो एक बार बच्चों को नाम बता दो। अभी आप कुछ दिन पहले भी दिखे थे बच्चों को, तो अपनी रैंक, अपना नाम, और ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपसे भी, मतलब कि कैसा, मतलब आपने तो बताया था कि आपको टेक्नोलॉजी बहुत पसंद थी, इसलिए आपने सेलेक्ट किया था वेदांतु। तो थोड़ा सा बताओ ना कि जर्नी कैसी रही और रैंक क्या था आपका? Sir, so sorry sir. Sir, so I am Sanjay sir, और मेरी रैंक 781 और मैं 2 years पूरा वेदांतु से कोर्स किया था। एंड एक्चुअली सर मैंने ये 10th में मतलब जब आपने फ्री कर दिया था पूरा कोचिंग, तब मैंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था वेदांतु के प्लेटफॉर्म से। एंड जब 11th में मेरे पास चॉइस आया कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन तो एक था ही कि ऑनलाइन तो लेना ही है। एंड फर्दर मैंने देखा था कि वेदांतु के टीचर्स मोस्टली स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं टीचर्स से डायरेक्टली बात कर सकता हूँ, वेरा अदर प्लेटफॉर्म से मैंने देखा नहीं कि मैं टीचर्स से किस तरीके से मतलब कांटेक्ट कर सकूँ। वो बहुत ही एक मुश्किल तरीका था, वेराज वेदांतु में बहुत ही इजीली हो जाता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं वेदांतु ज्वाइन करूँगा तो मेरे ऊपर फोकस रहेगा, मेरी इम्प्रूवमेंट जरूर होगी, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन और वेदांतु ज्वाइन किया। ओके, सो ग्रेट। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज, यहाँ पे बहुत बैकलॉग बन जाते होंगे बच्चों के, मतलब स्पेशली आप लोग में से भी बहुत बच्चों के बैकलॉग बने होंगे, मतलब व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट ऑल द थिंग्स ऑन टाइम, राइट? तो वो बैकलॉग जो है, मैं ये क्वेश्चन करण से पूछूंगा कि करण, बिकॉज आपका जो पूरा जो जर्नी रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग है। एक बार मैं जो भी बच्चे बाद में अभी ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि करण की जेईई मेन में फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक आई थी 95,000 एंड देन ही इम्प्रोवाइज्ड हिज रैंक टू 4,000 प्लस। एक बार उस पे तो अलग से सेशन लूंगा मैं करण आपके साथ, हमें भी जानना है, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे वो भी बोल रहे होंगे, हमें भी बता देते करण थोड़ा सा पहले, तो हम भी वैसे कर लेते, बट इट इज रियली इंस्पायरिंग, रियली एनकरेजिंग। तो and it is inspiring for all your juniors who are watching, because
इट इज नेवर से नेवर एटीट्यूड, कि जब तक चीजें खत्म नहीं हो रही, जब तक वो आखिरी दिन बचा हुआ है आपका जेईई एडवांस का, आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लगे रहना है अपनी गोल की तरफ. एंड देयरफॉर यू कैन ऑलवेज कीप ऑन एस्पायरिंग, कीप ऑन ड्रीमिंग, तब तक कि वो चीजें पूरी नहीं हो जाती. अगर नहीं होती तो एक बार ड्रॉप करके अगर कर सकते हो, पॉसिबल है, तो भी आप एक बार ट्राई करो, बिकॉज लाइफ में वो समय खत्म नहीं हो जाता है. तो करण, ये बैकलॉग आपकी लाइफ में आया था क्या 2 साल में, और कितनी बार आया और कैसे कंप्लीट किया उसको? जी सर, डेफिनेटली बैकलॉग मल्टीपल टाइम किया है, आई वुड से. सर मैंने एक्चुअली बैकलॉग को अगर किसी चैप्टर का काफी ज्यादा बैकलॉग पढ़ता रहता था तो उसको मैंने साइड पे रखा. मैंने मेरे स्ट्रेटजी थी कि मैं अगर काफी ज्यादा बैकलॉग किसी पर्टिकुलर चैप्टर का पढ़ता रहता है तो वो मैं ऐड में करूंगा, और मैं साथ साथ में जो अभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो करूंगा. अगर थोड़ा बहुत बैकलॉग लगता है तो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा के मैं बैकलॉग कवर कर लेता हूँ. मतलब साथ साथ में आप कवर कर रहे थे? जी सर, जी सर. ओके, बैकलॉग पे थोड़ा सा और बात करते हैं. साथ साथ में कवर करने वाले तो चलो मतलब बहुत अच्छी बात है, आप कवर कर पाए थे. बट दोज हु वर गोइंग टू स्कूल, स्पेशली प्रवीण, यू वर गोइंग टू स्कूल, मतलब मोस्ट ऑफ यू वर गोइंग टू स्कूल आल्सो, तो बैकलॉग तो आ रहा होगा ना, बहुत ज्यादा आ रहा होगा प्रवीण. सो हाउ डिड यू टैकल दैट बैकलॉग? Yes, sir. Parallelly going to school and handling these assignments is very difficult. Actually, you'll get a lot of backlog. So what I used to do now, I'll set up when a chapter get completed, I'll checklist these things are to be done, whatever the case may be. Those are class notes which I write during the classes, and short notes like concising it into an A4 sheet like in a 15 minutes, and after which Tattva exercise 1 and 2 should be done within that week of the chapter. Whatever the thing is there, like whatever the chapters have been completed, I have to do this was my primary goal. And for this I will, like I said, I will take off in my school if I am not able to complete it. And actually after reaching the 12th, I realized that in 11th I have actually didn't solve much. Like when I am looking back into 11th standard after reaching 12th, I realized that many of the chapters Tattva exercise 2 were pending, but the main agenda of completing the class notes, short notes, and the Tattva exercise 1 kept the chapter alive in me, so that when the JEE mains or advanced is actually nearing, I could revise them within few hours, and within few days I could solve them back. So it's not a big deal. Okay. And Charchit, what about you? Backlog आया था क्या? हाँ सर, लाइक बहुत बार आता है ये. तो मैं ऐसा कई बार तो ऐसा रहता है कि हर चैप्टर में थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो डिसाइड करे थे कि करेंगे अगला चैप्टर स्टार्ट होने के पहले, वो छूट जाते हैं. तो सर उनमें ऐसा रखा था मैंने कि लाइक कुछ चैप्टर्स तो ऐसे थे कि जो बहुत ही स्ट्रांग थे एंड उनके सवाल जल्दी हो जाते थे. तो उनको मेरा टारगेट था कि लाइक उनको करना ही है कंप्लीट, अगर एक दिन ज्यादा लग रहा है तो भी कर ही देना है. एंड कुछ चैप्टर्स ऐसे रहते थे जो कि डाइसी, लाइक इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, इतनी पकड़ नहीं बनी थी कंसेप्ट्स पे उनके. तो उनको ऐसा रहता था कि उनको धीरे धीरे रखना है. लाइक वीकली टारगेट बनाया कि इस वीक में इसके इतने करने हैं. एंड सर बैकलॉग में ऐसा कि बहुत सारा सब चैप्टर्स का, तो उनको वीकली डिवाइड कर दिया कि इस मंथ में 4 वीक है तो इन 4 चैप्टर्स के कंप्लीट करने हैं. तो उस तरह सर एक तरह से रिवीजन भी होता रहता था चैप्टर्स का, तो वो दिमाग से नहीं निकले फिर ये. Okay. So anyone had a different way of attacking this? कोई भी बच्चा मतलब जिसका कोई different way था बैकलॉग, because बैकलॉग सबसे बड़ी बच्चों की समस्या होती है और सबकी आती है, मतलब ये it is not only one स्टूडेंट. तो सानिध्या, यस आप बताओ कि एग्जैक्टली बैकलॉग को कैसे टैकल किया आपने? यस सर. सो सर स्पेशली मैंने 11th में सॉल्विंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया था. मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी कर रहा था, तो मेरा एक तत्वा का बहुत ज़्यादा पोर्शन रह गया था. सो उस समय तो फिर मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा वो हो रहा था कि इतना सारा रह गया है, मैं मतलब पीछे हो जाऊंगा. तो 11th में तो मैंने उसी से कवर किया कि जो बीच में हमें गैप मिलता है 11th और 12th के, उस टाइम पीरियड में मैंने सर एक लिस्ट बना ली कि मुझे इतना इतना तो करना ही है. मैं टीचर से ये करवा रहा था कि मतलब जैसे सर ने बोला कि अगर एडवांस के लिए करना तो एक्सरसाइज 3 तक आप कर सकते हो, एक्सरसाइज 4 आप रिवीजन के टाइम पे कर लेना. तो मैंने इतना अपना पक्का किया कि हर चैप्टर में एटलीस्ट एक्सरसाइज 3 हो जाए जो मेजर चैप्टर्स थे. और जो भी मतलब मेरे पास और चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी, नोट्स थे, काफी कुछ चैप्टर्स को मैंने जो वीक छोड़ा हुआ था मैंने उनको फिर कंप्लीट किया.
देन 12th में सर वही मतलब 11th की गलतियों से सीखना था, तो मैं ट्राई किया कि मैं एक भी बैकलॉग ना आने दूँ, बट बीच में मई में मुझे थोड़ा सा मैं बीमार पड़ गया था, जिसकी वजह से मेरा ऑलमोस्ट 15 डेज का बैकलॉग हो गया। सो मैंने वो सॉल्विंग का जो मटेरियल है उसको कलेक्ट किया एंड देन उसको हर संडे को मैंने टाइम फ्रेम में कंप्लीट किया। जिस संडे टेस्ट नहीं होता था उस संडे में बैठ के वही कर रहा, उसका एज अ टेस्ट कर लेता था। तो अभी बहुत ही अच्छी बात बोली कि मतलब हम किस तरीके से अपने बैकलॉग को, आपने देखा कि अभी चर्चित ने बताया, प्रवीण ने बताया, मतलब सानिध्य ने बताया कि किस तरीके से आप बैकलॉग को कवर कर सकते हो। अब नाउ इट्स अ लेट्स मूव टू 12। 11 से जब 12th में ट्रांजिशन होते हैं, बच्चों के दिमाग में जो क्वेश्चन आता है कि बैकलॉग तो है ही है, 11th का भी बहुत सारा बैकलॉग है, देन हाउ टू मैनेज 12th एंड 11th टुगेदर, एंड हाउ मेनी ऑफ यू, किसी ने किया था क्या 11th को 12th के साथ मैनेज, मतलब साथ साथ में कर रहे थे क्या 12th के साथ साथ? So Karan is one, Sanitya is another, but maximum बच्चों ने 12th को 11th को एलिमिनेट किया। तो करण आपसे पूछूंगा मैं कि कैसे मैनेज कर पा रहे थे आप 11th को 12th के साथ? सर मैंने एक्चुअली एक टाइम टेबल बनाया था कि मैं इतने से इतने दिन इतने से इतने आज डेली 11th का बैकलॉग मैं कवर करूंगा और बाकी टाइम मैं 12th पे फोकस करूंगा। तो डेली मैं जस्ट आधा घंटा या कभी कभी 15 मिनट ही 11th करता था, और वैसे करते करते अराउंड 4 महीनों में सारी 11th बहुत अच्छे से कवर हो गई। गॉट इट, मतलब बेसिकली आपने एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल अपने लिए बना लिया जिसको आप फॉलो कर रहे थे, ताकि आपका 11th के भी जो भी बैकलॉग है पहले आपने उसी पे फोकस किया, वो 12th के 4-5 महीनों में कवर हो जाए। एंड 12th कंपैरेटिवली इजियर होता है 11th से, तो टाइम भी ज्यादा मिला होगा, राइट? ये बताओ, ऑनलाइन की दुनिया है, बहुत सारे लोग बोलते हैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, ऑनलाइन की दुनिया है, वी डोंट मेक फ्रेंड्स इन ऑनलाइन। हाउ मेनी ऑफ यू हियर न्यू ईच अदर फ्रॉम 11th 12th, मतलब एक दूसरे को जानते थे? कितने लोग जानते थे एक दूसरे को यहाँ पे, मतलब? ओके, सो श्वेता, करण, प्रवीण न्यू ईच अदर फ्रॉम 11th and 12th, few of you, मतलब आपके दोस्त बने थे क्या यहाँ पे? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उससे पूछता हूँ, आसिम आपसे पूछता हूँ कि आपके दोस्त बने थे क्या यहाँ पे और ऑनलाइन में? अच्छा, तो क्या किया, मतलब घर में जब बोर होते तो क्या करते थे? सर बाहर दोस्त रहते थे, उनके साथ थोड़ा वॉक करते थे और खेलते हुए भी थे 11th 12th में? नो सर, खेलना छोड़ दिया था। ओहो, फिर से शुरुआत करेंगे अब हम जिंदगी में, वापस से खेलना, खेल कूद की शुरुआत करेंगे। लेकिन आपकी सेहत देख के तो नहीं लग रहा है, मतलब कि आप खेल कूद तो कर ही रहे थे थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा भी पूरे टाइम तो नहीं बैठे होगे मतलब टेबल चेयर पे? नो सर, पूरा सिर्फ लॉकडाउन में वही खेलना बंद हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन में खेलना बंद। ओके, तो सोएंगे, व्हाट अबाउट यू, डिड यू मेक फ्रेंड्स और नो? सर मैं वेदांतु में तो वैसे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन मेरे बाकी जो फ्रेंड्स है वो भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे। सब लेकिन डिफरेंट कोचिंग्स में थे। सर मैं 1 घंटे डेली उनके साथ चेस, स्क्रैबल, जियो जैसा टाइप गेम्स रोज खेलता था। ओके, सो ऑनलाइन ही खेलते थे वो? हाँ सर, ऑनलाइन मतलब दोस्त, ये बढ़िया है, मतलब अच्छा है, मतलब पूरी दुनिया ही ऑनलाइन, मतलब अब तो हमारा वो आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है, वी आर, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू यूज्ड VR, बट VR एक्चुअली टेल्स अस कि वी कैन इमर्स इन दैट वर्ल्ड एंड वी कैन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन दैट वर्ल्ड। बट अच्छा है, IIT जाके वहां पे फिजिकल फ्रेंड्स बनाना और फिर लाइफ देखना, इट विल बी वेरी डिफरेंट। One thing is for sure, once you go into IIT, you will get lot of opportunities to make friends. You will get lot of opportunities to explore yourself. And मेरा advice आप सबके लिए ये होगा, one, पहला advice, be humble. Even if you have the IIT tag, IIT जाते हो, top NIT जाते हो, depending की branch आप prefer कर रहे हो कि college prefer कर रहे हो, if you go there, just be grounded, because ultimately एक सक्सेस का जो सबसे बड़ा पैमाना होता है किसी भी बच्चे के लिए, वो होता है कि हम ग्राउंडेड है कि नहीं, अपने सक्सेस को अपने सर पे चढ़ने देते हैं, या फिर हम उसके साथ बिल्कुल 1-on-1 होके उसके साथ इमर्स हो जाते हैं। और सेकंड इज एक्सप्लोर योरसेल्फ एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ टैलेंट जो कि आपके अंदर छुपा हुआ होता है, जो जैसे ही आप निकलोगे, बिकॉज आपका बहुत सारा टाइम कोविड में गया एंड देयरफॉर यू हैव नॉट बीन एबल टू, जो 10th 11th 12th का जो टाइम होता है ना, फेज होता है जिसमें हम बहुत
शरारतें भी करते हैं, बाहर जाते हैं, मिलते हैं बहुत सारे लोगों से, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम रहा होगा कंपैरेटिवली जो हम लोग के समय था, या आपके जो सीनियर्स में रहा होगा, बहुत सीनियर जो रहे होंगे. तो आई वुड से गो देयर इन IIT एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ, एंड दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. तो मैं बच्चों यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सब को लास्ट में बांधने वाले जो हमारे एकलव्य के द्रोणाचार्य है ना, मैं उनको बुलाना चाहूंगा. विकास सर, आई वुड लव टू call you over here because every student here sitting here has been threaded by Vikas Agarwal sir, because he has been successfully, मतलब ये इन्होंने मतलब पिछले जिंदगी के 4 साल एकलव्य के कंटेंट को, एकलव्य के पेडागोजी को, एकलव्य की चीजों को इम्प्रूव करने में लगाया है, डे इन एंड डे आउट. एंड लास्ट मंथ ही आल्सो फेल सिक. आई डोंट नो, मतलब शायद ज्यादा प्रेशर ले लिया था आप लोगों के साथ साथ कि रैंक लानी है, मतलब he was hospitalized and definitely is out of it, but clearly he has put up lot of focus, lot of hard work on all of you, and that is what I love about this team Vedantu, because ये पक्का है कि आके मुझे हर साल बोलते हैं कि सर जो बच्चे मेहनत करने वाले मैं उससे डबल मेहनत करने वाला हूँ. एंड एक्चुअली आई बिलीव एवरीवन विल अग्री विथ मी. जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं ये तो अग्री करेंगे कि जो टीम है यहाँ पे, जो टीचर्स हैं, वो मतलब उन्होंने एक बार भी ऐसा फील नहीं होने दिया होगा कि आप ऑनलाइन में हो और आप देयर इज सम कोई कमी रह गई हो आपकी लाइफ में. ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना? एक बार जोर से बोलो यार, सब अनम्यूट करके एक बार बोल सकते हो. Yes. सर Yes, sir. ऑफलाइन से बेटर है. ऑफलाइन से बेटर ही है. चलो Yeah, but to better, you know. Offline. एवरीवन इज सेइंग ऑफलाइन से बेटर है. ये सो विकास सर, ये बताओ आप, मतलब सबकी डोर तो आपके हाथ में थी, मतलब तो how are you feeling after these results? मतलब this is a great result. सबसे पहले तो मैं I would like to thank you and the entire teacher team who has worked day in and day out with these kids. पहला thank तो आपको जाता है, because clearly trust me, I dream of results. मुझे लगता है कि हर बच्चे को उसके पोटेंशियल में पहुंचाना चाहिए. We don't care about the rank. Rank is an outcome, but we believe कि every student should reach to their potential. And that is the ultimate goal. कई बार उस जर्नी में हर कोई कुछ पहुंच पाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते. Somebody is able to reach that, somebody is not able to reach that. But what at our part we can do is work hard, and that is where the first round of applause. आप लोग भी एक बार तालियां मारो पूरी टीम के लिए, ये जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए, और जिन्होंने आप पे मेहनत किया है 2 साल 3 साल, कुछ बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं. Second is I believe your parents, because they play an extremely important part. First of all, they trusted Vedantu, they allowed you to study at Vedantu online में, because parents के लिए बहुत difficult होता है. हर कोई आके बोलता है कि बेटे को आपने वहां नहीं कराया, बेटे को आपने वहां नहीं कराया, उस ऑफलाइन में ये होता है, उस जगह पे ये होता है. And they have taken, although it must have been your choice, but they actually backed your choice. So and they actually were with you, because मेहनत आप अकेले नहीं करते हो. इस जेईई नीट की जो तैयारी होती है वो आपके साथ साथ पूरी फैमिली की तैयारी होती है. दे एक्चुअली एवरीवन वर्क इक्वली हार्ड विद ऑल ऑफ यू, राइट? तो पूरी घर में तैयारी करिए. उनको भी बहुत बहुत जोरदार तालियां एक बार अपनी तरफ से दे दो उनको, तालियां बजा के. मतलब दे एक्चुअली डिजर्व दैट रिस्पेक्ट, लव फ्रॉम ऑल ऑफ यू. एंड क्लियरली आज जरूर उनको हक करना, मतलब मेरी तरफ से, मतलब जस्ट इट्स ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर साइड. इधर पांव छू के, जैसे भी आप जिस ट्रेडिशन में जो होता है, मतलब ऐसे करना जरूर. एंड ओवर टू यू विकास सर, मतलब आपके बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, मतलब कैसा लग रहा है आपको, कैसी फीलिंग हो रही है? अब न्यूज चैनल की तरह मैं बच जाता हूँ, आप पे आता हूँ, और कैसी फीलिंग है आपकी? तो मेरे को तो सर बड़ा अच्छा ही लग रहा है, मतलब कि जो बच्चों ने, मतलब मेरे को सर, मैं सारे बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि गोइंग फॉरवर्ड आल्सो ना, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस. ठीक है, कि कभी भी ना आउटकम पे ज्यादा कंसंट्रेट मत करना. तुम ये देखना कि जो तुम अचीव करना चाहते हो उसके लिए वेदर यू आर फॉलोइंग द राइट प्रोसेस और नॉट. ठीक है, और आउटकम की चिंता मत करना, बस प्रोसेस को सही रखना, हार्ड वर्क में कमी मत छोड़ना, एंड फॉलो दिस प्रिंसिपल दैट वी वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ नो रिग्रेट्स. ठीक है, मतलब हमें वो करना चाहिए कि आज से 5 साल बाद अगर हम पलट के देखें कि हमने आज जो किया वो सही किया कि गलत किया, तो 5 साल बाद भी हमें जवाब ये मिलना चाहिए कि हमने सही किया था. उसके बाद रिजल्ट कुछ भी आता है ना, उसका फर्क, मतलब फिर फर्क नहीं पड़ता, मतलब इट डजंट मैटर. ठीक है, तो बस ये एक लेसन अपने साथ लेके जाना. और बाकी खुश तो मैं ऑब्वियसली हुई हूँ, मतलब मेरी खुशी तो चली जा रही है. वो अभी तो अभी 1-2 महीने के लल के बाद विल अगेन स्टार्ट गियरिंग अप फॉर नेक्स्ट ईयर क्लब है. तो यही है, बस मैं बच्चों से यही कहूंगा. और
बाकी बच्चों ने भी जो कन्फेशंस करे हैं, जैसे कि सुमित का मुझे अभी तक नहीं पता था ये डेली 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ खेलने में खर्च करता है, कभी इसने बताया नहीं किसी वीडियो में। नहीं तो इसकी अच्छी खिंचाई करता है। मतलब आप ये भी जिंदगी के छीनना चाहते हो इनसे लोकल की कोचियां, है ना? पहले तो नाम के साथ ही आपने इसके वो कर दिया, 2 साल बेचारा आज बोल पाया, 2 साल बोल भी नहीं पाया। एनीवेज बच्चों, मतलब व्हाट डू यू वांट टू शेयर विथ योर जूनियर्स, बिकॉज आई नो बहुत कुछ शेयर करने को है आपके पास। 1 घंटा बहुत छोटा ही रह जाता है, मतलब इट टेक, मतलब आप पूरा दिन भी रखूंगा चलता रहेगा ये मीटिंग और तब भी खत्म नहीं होंगी आपकी बातें, आपकी कहानियां। तो one final message from each one of you to your juniors. Exactly, I would like you guys to share your. We'll start with Charchit. हाँ सर, तो मैं उनको कहूँगा कि अभी मजे लेने हैं। फिजिक्स, मैथ्स एंड साइंस ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। अगर तुम इसको केवल सब्जेक्ट की तरह देखोगे जो तुम्हें मार्क्स दे रहे, तो मजा नहीं आएगा। इनको पढ़ो, समझो उनको, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे तुम्हारे मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी मजे लेने हैं पढ़ते हुए बस। ये तो ये मुझे एक्चुअली ना मैं बताया, मैं केमिस्ट्री में बहुत देर से पता चला। लाइक मैं ड्रॉपर हूँ, तो 2 साल तो इतना मैं केमिस्ट्री को मार्क्स लेने की तरह पढ़ता था, तो मुझे मिले ही नहीं मार्क्स कभी वहां से। एक्चुअली फाइनली जब मैंने ड्रॉप ईयर में वेदांतु में मोहित सर से करा था, तब मुझे समझ आया यार ये तो बहुत अच्छा है। सबके रीजन यहाँ तो केमिस्ट्री के भी, तो तब समझ आया मुझे कि हाँ ये ऐसे ही करना चाहिए था मुझे। Awesome. Yes, Asim. मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो टीचर कह रहे हैं बस उन्हीं को मतलब पूरा फॉलो करें, क्योंकि टीचर ही मतलब उस चीज को बता सकते हैं कि क्या क्या गलती नहीं करनी, क्या क्या गलती क्या गलत हो सकता है। जो सर कहें पूरा उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। Awesome. So again, सर आपने पेरेंट्स से सपोर्ट की बात की थी, तो सर मैं उस पर कुछ कहना चाहूँगा। सर जैसे हम ऑफलाइन में कहीं लाइक कोटा या दिल्ली वगैरह जाते हैं, तो हम लोग अपने पेरेंट्स के तो पास रहते नहीं, तो फ्रेंड्स नजर नहीं रख पाते। लेकिन ऑनलाइन में पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, क्योंकि टीचर्स से तो आप ऑनलाइन तो कनेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन में कुछ और ही कनेक्ट होता है, बट पेरेंट्स का रोल सर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। तो मैं सर मेरे पेरेंट्स ने, मेरे पापा ने मुझे बहुत मेंटर किया है पूरे 2 साल। पहले तो लाइक सर जब बहुत गंदा रिजल्ट आता था तो डांट पड़ती, सर गुस्सा आता था कि बुरा लगता था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि यही इम्पोर्टेंट, मैं इसी से ग्रो कर रहा हूँ। और सब पेरेंट्स से लाइक सर मैं जब JEE मेंस का फर्स्ट रिजल्ट आया था तो मेरी 14 की रैंक आई थी सर। कुछ लोगों की रैंक बहुत अच्छी होगी, लेकिन मैं तो 99 परसेंटाइल तो सोच ही रहा था, फिर 99 पॉइंट समथिंग जो उसके आगे जो भी करना है वो। सो सर मैं बहुत डिवास्टेटेड था, हमें समझ में नहीं आ रहा कि मैं लाइक एडवांस के लिए प्रिपेयर करूँ या सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करूँ। मुझे से एडवांस से कॉन्फिडेंस नहीं आता सर। सो मैंने अपने पापा से बात की, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि वो एडवांस का लास्ट के 40-45 दिन में भी कर लेगा। तो मुझे खुद उम्मीद नहीं थी, लाइक लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि हाँ कर लेगा, और अभी तो एडवांस सेकंड में अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर। तो इसमें मैंने यही किया, और लाइक मेरे पापा ने जो भी कहा था सब कुछ सही हुआ। Great. So again, मतलब definitely supportive parents जो online बहुत बढ़िया। Good. It's a very interesting and it's a very deep point that if parents are supporting and they are with you, then online becomes a very important tool because it saves time. It actually gives you a lot of confidence, and parent has to play a very integral part if you are actually joining online. Yes. Good point. Yes, Soumya. Yes, sir. Actually, there's an online coaching just 15 minutes from my home. So, offline coaching. So, I could have gone there, but here in Vedantu, like 𝐒𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 already said about parents, I've talked about, they play a major role. But my advice to my juniors would be, my father is from IIT Roorkee, 1990 batch, and he always told me to strengthen my concepts. My advice will be, give your 101% in the class itself. Because if you are listening to your teachers in the class and understanding everything, then you'll realize it later that 60% of your job done then and there. And that is very important in the long run. So. Awesome. Over to you, Shweta.
Yes, sir. So in this 2 years, like I made this journey a part of my identity. So that was the like Vikas sir also used to say the process is what makes you an IITian and not the exam. So I constantly reminded myself of that, and it became a part of my. I made it a part of my identity, so that I mean everyone, even my parents, they. When they talk to me, I could. So this was the answer to all of my distractions and all. I could. I did not have distractions because of this particular thing. That I was aware that what I wanted to do, and I was very focused in the process. So. Okay. It is coming out very commonly, right? That process is very important, and you should enjoy the process rather than just focus on your rank and everything, right? So great. And Vikas Agrawal sir always says that it is an IITian attitude. It is not about the IIT. Ultimately, IIT you might get, you might not get, but it is the attitude which you can wear all through your life, right? And that's what matters the most. Right, Vikas sir? Yes, sir. आपके बच्चे सारे मतलब आपको आपकी सारी बातें उन्होंने बांध के रखी है अपने साथ. Yes, over to you, Mahima. Yes, so like last year I was in that batch. So और कोई भी problem हो, कुछ भी कभी लो भी feel हो रहा है तो sir से बात कर लो. Sir will suggest you a number of ways to overcome the problems. Like when I changed the batch to it was like already 2 months batch was there, and I had to cover certain chapters. So I asked to sir like how to cover, and I prepared the sequence and I covered all these chapters. And at the time before exams also, if you want to discuss something, sir was always there. And at the time, like I had given many Olympic, KVPY, NSCC, NSCP, everything got just missed by 2 or 3 marks. And when we used to share results, sir never used to say that you missed something. He used to motivate us for the upcoming exams. And right, this was something which is very important when you're having someone to lift you up at the times when you feel low. And I would say, like, believe on your teachers, everything, like, if you follow word to word, you will see immense improvement. Like in physics, my 11th was not so much strong, but in 12th, when I studied from Vikas sir, what he used to say, everything I followed, and I got a lot of confidence on physics of my 12th, right? So from the point when I not trusted my physics to the point when I started believing that my physics was best, and this was all because of Vikas sir and Anand Sir. Like, yeah, they literally made me believe that I can do it. And next thing I would say, like, we should maintain a diary, or journaling is something which I did. So whatever you face in your entire 2-year journey, just write it down. Like, at that time I used to think like कि अभी लिख रहे हैं कुछ नहीं होगा, but अभी जब पेपर सब हो गया उसके बाद उस डायरी को देखो तो it feels like something like literally we have done something very great. उन सारे ups and downs को पढ़ो तो आज बहुत अलग feeling आती है. Awesome, awesome. कभी हमें भी मौका देना, मतलब publish that. We would love to read that. Make it a book. Yes. Yes, Karan. Sir, I would just say कि don't give up. Actually, अभी काफी students 11th में भी होंगे, 12th में भी होंगे. आप लोगों को लग रहा होगा कि यार काफी tough time है, काफी anxiety वगैरह हो रही है. Last का जो 1 month होगा वो इससे भी ज़्यादा anxiety full होगा, इससे भी ज़्यादा तुम्हें डर लगेगा. But just don't give up. Believe in yourself. और yeah, end में सब कुछ अच्छा ही होगा. Just keep doing hard work. You can do. इतने मैच्योर हो गए ना बच्चे, मतलब एकदम से आईटी वो टैग लगते ही मतलब सारी मैच्योरिटी अपने आप ही आ गई मुझे लगता है. मतलब good to see and good to hear all of you मतलब बच्चों. And over to you, Praveen. I would like to steal some points from Vikas sir actually. So whenever we have a query or something, the final answer you used to give is answer lies within. So one of the important process in the JEE preparation which will be lifelong with you is that decision making thing. You have to prioritize and sacrifice things which are actually necessary. So like you might be having many other queries, but all the thing is that answer lies within. And think like an IITian, as because I used to say, you should think like an IITian and search for the answer within yourself. Like completing your backlog, you know that you have to make an extra schedule and you have to solve, and all those stuffs, answer lies within will be my answer. So. Wow, Vikas sir, कुछ हमें भी ज्ञान देता. So basically, great to see that students following exactly what you have said, and it is very important. The common theme which has come out is consistent रहो. हार्ड वर्क तो करना ही करना है, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहो. टीचर जो बोल रहे हैं वो बात सुनते रहो, गार्ड बांध करके रखो, बिकॉज एक्चुअली द आंसर लाइज विद इन यू.
nobody can tell you, or everyone can tell you everything of their own, but you have to follow it. You know exactly the answer. मतलब बैकलॉग कवर करना आपको पड़ता है, मेहनत करनी है, फिर भी आप जाके पूछोगे कि सर बैकलॉग कैसे खत्म करें, भाई मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, एंड दैट आंसर यू नो, बट यू वांट समवन टू से सम शॉर्टकट विद शॉर्टकट फॉर दैट. वो शॉर्टकट लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों. सो हर किसी को कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहना है. प्लेटफॉर्म डजंट मैटर, ऑनलाइन ऑफलाइन डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आप जहां पे भी हो आप शिद्दत से चीजों को कंप्लीट करते रहो. डेफिनेटली ऑनलाइन का एक एज है, तो ऑफलाइन का अपना एक एज है, बट दोनों जगह पे आपको मेहनत करनी है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और अपनी मंजिल की तरफ लगे रहना है विद बिलीविंग इन योरसेल्फ दैट हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. मतलब लास्ट तक, वो जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको विश्वास करते रहना. सो विकास सर, एनी लास्ट thing? But before I go, I will just congratulate each one of you and all those students this year who have put up their hard work, who have been successful, who have not crossed the line. It doesn't matter, but you have put up your hard work. For us at Vedantu, I think you deserve a big round of applause from all of us at Vedantu because you have put up your hard work, right? So any parting message, Vikas sir? So sir, मैं जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग दृष्टि और संकल्प के स्टूडेंट हैं, तो उनको मैसेज देना चाहूंगा गाइस. बच्चों, प्रोसेस ना हमेशा ही बहुत सिंपल रही है और वो हमेशा सिंपल ही रहेगी. ठीक है, मतलब द थिंग इज कि सिंपलिसिटी इतनी ज्यादा है कि हम कई बार बिलीव नहीं कर पाते कि आईआईटी क्रैक करना इज ऑल अबाउट सच सिंपल थिंग्स. तुम्हें रेगुलरली क्लास अटेंड करनी है, टीचर्स जो होमवर्क दे उस होमवर्क को रेगुलर बेसिस पे अटेम्प्ट करना है, उसमें जो डाउट्स आए वो डाउट्स अपने टीचर से पूछ के क्लैरिफाई कर लेते हैं और उन डाउट्स को रिपीट कर लेना है. ठीक है, बस ये चीज तुम्हें डे इन और डे आउट कर रही है. जितने भी संकल्प के दृष्टि के बच्चे जो अगले साल आगे 2025-24 की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें बस ये चीज डे इन डे आउट कर लेनी है. उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है. टीचर्स समय समय पे इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, तुम वो फॉलो करते रहो. ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू कि यू विल फाइंड दैट यू हैव बिकम एन आईआईटीएन बिफोर क्रैकिंग द आईआईटी जेईई एग्जाम. तो बस इतनी सी चीजें, इसको फॉलो करते रहो. बस बहुत सिंपल होता है और यही चीज तुम लोग शायद मिस कर जाते हो कि इतनी सिंपल चीजें करनी है बस. तो बस मेरा यही मैसेज है बच्चों को. बहुत बड़ा मैसेज है सर. मतलब बेसिकली डे इन एंड डे आउट केवल जो काम सिंपल सी चीज है उसको कंप्लीट करते रहो. सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ऑल दोस हु विल बी गिविंग द एग्जाम इन 2024 and 2025, all the very best from all of us, Team Vedantu, and just we wish you all the best. We wish you all the success in your life. But as Pulki sir says, the real success is y is equal to x square on your faces. तो देखो ये बच्चों के चेहरे पे after 2 years of hard work, they are today with y is equal to x square. नहीं है तो थोड़ा सा हो जाओ अजीब, थोड़ा सा y is equal to x square लाओ यार, इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो. So it is extremely important, and that is for us is real success, because you, in any shape or form, you will always remain diamond. You are diamond, and you will always remain diamond in our eyes, because truly यार लाइफ में ना ये सब ये एक step है, मतलब just to remind ourselves that we are on the right track. So with this, okay, चलो bye bye, take care, love you all. Bye students, take care. Yes, bye. Thank you, sir. Bye bye bye.